I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello guys, what's up? How are you doing? Welcome back to another live stream. So guys, today we gonna cover the launch event of Nvidia, that their new card series, that is RTX 3000 ampere. Today we gonna cover that event, and after that we for Valorant. 18 हो रहे हैं, 9:30 पर अभी तो 12 मिनट। तो लेट मी टॉक, तो बात कर। जयू मोरी, हाय हाय, हेलो ब्रदर, वेलकम टू द स्ट्रीम, रियली अप्रिशिएट इट। एनीवन हियर? Nvidia. Oh, that I'm going to honestly. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. गाइस, ये सबसे पहले बताओ, ये वॉलपेपर कैसा लग रहा है? लग रहा है ना एक नंबर। ये पहले बताओ मुझे। We keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is I've been living
the ultimate countdown. 21 days, 21 years before we enter the future. Join us to celebrate the wishes to 1999 and 40. We won't miss a Nice. thing that you do. You better watch what you keep from us before it's too late to go back. Our economy is broken. We shouldn't have to kill ourselves to serve someone else. This is So we stream back, don't forget to hit the like and subscribe button. Every like and subscribe will be appreciated. but I can't abandon it. Be careful. Be careful. Be careful. बॉलीवुड का गाना सुनोगे? इससे लगाते हैं। आगे आगे जाए छोड़ो कभी हमारा साथ कभी ना कभी तो नजर आ तेरे नाम 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 सर्दी जब आए कप कप आए संभालो हमको जमीन पर लाके हमें गवाए संभालो हमको सभी से प्यार चाहे दुनिया सबके राहे सभी से प्यार चाहे ठंडी हवा हम ही तो है तुम्हारे ख्वाब तभी तो है तुम्हारे पास ना छोड़ो कभी हमारा साथ कभी ना कभी तो नजर आ
तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम मेरे नाम तेरे नाम मेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम मन हलचल हो जाए घबराए आए आए ना सब रब जब खो जाए घबराए आए आए ना हम ही बर्बादे हम ही है वरदान हम ही बर्बादे हम ही है वरदान मन हलचल हो जाए घबराए आए आए ना सब रब जब खो जाए घबराए आए आए ना हम ही बर्बादे हम ही है वरदान हम ही बर्बादे हम ही है वरदान तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम मेरे नाम तेरे नाम मेरे नाम So be stream fire, don't forget to hit the like and subscribe button. ठंडी हवा विवियन इवॉन, ये क्या है? ये भाई लॉन्च इवेंट आने वाला है एनवीडिया का, तो वही है। ये बताओ ये वॉलपेपर कैसे लग रहा है? हम तोड़ गए जब तुम झुके तब से तुम नजर में आ रुके हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा अब तो होना है वही जो बनाए जाना हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा अब तो होना है वही जो बनाए जाना हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए 2 मिनट बाकी है फ्रेंड्स, बस 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। ऐसी अजनबी थी आपसी 30 सेकंड पे चलेंगे हम लोग। कि हमसे पूरा एक्सप्लेन करो भाई, कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। अरे लॉन्च इवेंट है यार एनवीडिया का, ये नहीं तुम्हें मालूम? 2 मिनट रुको, बस शुरू होने वाला है। ये बताओ वॉलपेपर कैसा लग रहा है ये वाला? धांसू लग रहा है कि नहीं? हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए 3 मिनट बाकी है अभी। हम तो हैं समाए हम तो हैं जमी हमसे ना कभी हम तो हैं समाए हम तो हैं जमी हमसे ना कभी हम तो हो गए जमा धीरे धीरे थालमा हमसे ना कभी हम तो हो गए जमा धीरे धीरे थालमा हमसे ना कभी धांसू नहीं, जबरदस्त। ये भी सही है भाई। ये भी सही है। चलो भाई चलते हैं लॉन्च इवेंट पे। 2 मिनट बाकी फ्रेंड, 2 मिनट। Ultimate countdown, 21 days, 21 years before we enter the future. Join us to
celebrate the biggest in PC game in 1990 sports comes 2 minutes friends 2 minutes एक सेकंड guys only 54 seconds 30 seconds left 12 seconds okay Like sports, esports captures the thrill of victory and the agony of defeat, and the human drama of athletic competition. Esports is on its way to be the biggest sport. I have something special for all the GeForce gamers around the world. 4 gifts. I hope you like them, and you'll find new ways to game. First, big news. Fortnite is turning RTX on. Now Minecraft and Fortnite, the #1 and #2 most played games in the world, have RTX on. Fortnite will get ray trace shadows, reflections, ambient occlusion, and आवाज सही आ रही ना these effects look fantastic with the art style of Fortnite. I can't wait to see a Fortnite concert with RTX on. The last one with Travis Scott आवाज was सही आ रही watched ना by 28 million people. Epic made a trailer for you. Let's play it now. Fortnite का ट्रेलर है ये भी सही है यार भाई क्या ट्रेलर बनाया है Fortnite ray tracing and dealers coming soon. अच्छा ray tracing 75% Fortnite में of भी आ GeForce रहा है gamers play esports. Esports Yeah, is a right. game of milliseconds. Reaction time is a combination of the gamer and the Hello, machine. Rent. Let me explain. This is Valorant. In this example, the opponent is traveling at 1500 pixels per second, and it's visible in this भाई opening for टिपिकल only गेमर लिखा है 180 टिपिकल इंडियन गेमर milliseconds. रहता है भाई तो A अलग ही typical gamer has a मजा आता है reaction ब्रो time of 150 milliseconds from full time to टिपिकल action. इंडियन गेमर रहता है You भाई can तो only hit this opponent if मजा your ही आ PC जाता है adds रियली less than 30 milliseconds. बिना ये Most gamers टिपिकल have टिपिकल latencies गेमर far वो greater है than 30 milliseconds, many up to 100 फॉरेन milliseconds. वाला Today we're announcing a new esports technology called हम Nvidia टिपिकल इंडियन गेमर Reflex. Nvidia Reflex optimizes the यहाँ पर rendering ये pipeline समझा across रहे हैं ये CPU and MS GPU to reduce सिस्टम latency by up to लेटेंसी के 50%. In September, we're releasing Reflex with our game-ready driver. Over 100 million GeForce gamers will instantly become more competitive. Valorant, Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone, and Destiny 2 will be the first to integrate Reflex technology. टेक्नोलॉजी इन Esports सब pros and गेमों में enthusiasts आता है strive for zero latency. For you, we're announcing an insanely fast and beautiful display. A 360 Hz G-Sync display designed for esports. This display has a built-in precision latency analyzer. Just connect 360 your हर्ट्ज सालियो The Nvidia 360 360 hertz. Hz G-Sync esports displays ये भी सही है are भाई arriving this fall
from Acer, Alienware, Asus, and MSI. We've made a video comparing gaming on a 60 Hz, 144 Hz, and 360 Hz display. You can see immediately how 360 Hz display will help you target and track an opponent. For the 20 million live streamers, we have something really cool for you. Nvidia Broadcast turns any room into a broadcast studio. Nvidia Broadcast runs AI algorithms trained by deep learning on Nvidia's DGX supercomputer, one of the most powerful in the world. Effects like audio noise removal, virtual background effects whether graphics or video, and webcam auto-framing is a virtual camera person tracking you. These AI effects are amazing. Available for download in September and runs on any RTX GPU. Brandon and GeForce Marketing will now show you NVIDIA Broadcast. Hey everybody, I'm Brandon and I'm very excited today to talk to you about our NVIDIA Broadcast app. Like many of you, I've been home a lot more lately. I've been video conferencing all day and then gaming and streaming all night, and I have a very basic webcam and microphone setup. NVIDIA Broadcast makes these things supercharged with a lot of new awesome features that really bring it out using the power of AI and RTX GPUs. The first one I want to talk about is noise removal. So I've asked my girlfriend to join me with a blow dryer here. And that distracting sound makes it very hard to understand what I'm saying. But when I turn on noise removal in NVIDIA Broadcast, you find that it's completely gone. And that blow dryer is still going. But NVIDIA Broadcast isn't just awesome audio features. There's some really exciting video features as well. Let's take a look. First up, we have the ability to blur your background, which you may notice that I need because I have a very cluttered and messy room. But when I turn this background blur feature on, all of a sudden I get this really classy effect. And I can adjust the strength of that from low to high. Or, if I want, I can actually replace the background altogether. Without green screen, the magic of AI. It's that easy. Or, if I want to jump into some gameplay, I can remove the background altogether and jump into some Valorant. Without green screen. With a green screen effect without actually having to have one at home. I don't have to play good, but at least I can look good. Nvidia. Now sometimes, Nvidia just chatting stream, I want to zoom in to get a more personal connection with the audience. But the problem is I bounce around so much, it's easy for my head to get out of frame. With the auto frame feature, it's like having your own personal cameraman that follows you wherever you go. So, if for example, I wanted to reach over and grab my cool Valorant hat and show it to everybody, it follows me every step of the way. I just find NVIDIA Broadcast to be really exciting, as both a streamer and as someone who works from home. The ability to remove distracting noise, improve your background, and keep yourself in the center of the frame are all awesome features in one app, and I just can't wait for you guys to try it. A new form of art has emerged from gaming called machinima. Artists are using game assets to create cinematics. There's been tens of billions of views on YouTube. Most are shorts. Some are even recreating entire classic movies. It's becoming a whole new art genre. Today, I'm going to show you an app that will make these cinematics amazing. It's called NVIDIA Omniverse Machinima. It's an app built on our Omniverse 3D workflow collaboration platform. Omniverse is a universal design tool asset exchange with a viewer based on photorealistic path tracing. The engine is designed to be physically accurate, simulating light, physics, material, and artificial intelligence. We have connectors for most third-party design tools, like 3ds Max, Maya, Photoshop, Epic Unreal, Rhino, and many more. The Machinima app brings in elements and assets from games and third-party collections like TurboSquid and lets you mix and compose them into a cinematic. Creators can use their webcam to drive our AI-based post estimator to animate characters, drive face animation AI with your voice, add high-fidelity physics like particles and fluids, make materials physically accurate, and then when done with your composition and mixing, render film quality cinematics with your RTX GPU. NVIDIA Omniverse Machinima, beta in October. Sign up at nvidia.com/machinima. Let me show you a demo we created in a few days. We started with assets from Mountain Blade 2, Bannerlord. You're gonna love this.
Omniverse. For 40 years, since Nvidia researcher Turner Whitted first published his paper on ray tracing, computer science researchers have chased this dream to create super realistic virtual worlds with real-time ray tracing. Nvidia, seeing the ultimate limits of rasterization approaching, focused intense efforts over the past 10 years to realize real-time ray tracing on a large scale. At SIGGRAPH 2 years ago, we announced the Nvidia RTX. Now 2 years later, it is clear we have reinvented computer graphics. Nvidia RTX is a full-stack invention. RTX starts with a brand new GPU architecture, but it is so much more. It includes new engine tech and a bunch of new rendering algorithms. RTX is a home run. All major 3D APIs have been extended for RTX. RTX is supported by all major 3D tools. RTX tech is incorporated into all major game engines. There are hundreds of games in development and thousands of research papers of new rendering and AI algorithms enabled by RTX. The RTX GPU has 3 fundamental processors: the programmable shader that we first introduced over 15 years ago, RT Core to accelerate the ray triangle and ray bounding box intersections, an AI processing pipeline called Tensor Core. Tensor Core accelerates linear algebra that is used for deep neural network processing, the foundation of modern AI. AI is the most powerful technology force of our time. Computers that learn from data and write software that no humans can. The advances are nothing short of breathtaking. Nvidia is doing groundbreaking work in this area. You might have seen our work in self-driving cars and robotics. Computer graphics and gaming will also be revolutionized by deep learning. Let me show you some recent works and the art of the possible. The first video is a generative adversarial network that has learned to synthesize virtual characters of any artistic genre, including photorealistic. Second is a neural network that animates a 3D face directly from voice. You require more Vespine gas. It's dangerous to go alone. Take this. The AI character can speak in any language, be any gender, and even rap and sing. Third is a character locomotion of infinite number of positions. Imagine negotiating arbitrary paths and obstacles. The fourth is reconstructing 3D from video. Imagine the possibilities. Record video, interact in 3D. This one is a deep learning model that learned the physics behavior of cloth animation. Finally, this deep learning model of ray tracing can predict colors of missing pixels, so that fewer rays need to be cast and fewer pixels need to be fully rendered. We can achieve orders of magnitude speedups. AI is certain to play a giant role in the future of computer graphics and gaming. The powerful Tensor Cores and RTX GPUs will let us do AI in real time. One of the first major AI computer graphics breakthroughs is DLSS. Here's the challenge. Real-time ray tracing is far more beautiful but requires a lot more computation per pixel than rasterization. So the solution is to ray trace fewer pixels and use AI on Tensor Cores to up-res to super-res to a higher resolution and boost frame rate. DLSS took nearly 2 years of intensive research. We built a supercomputer to train a network. The DLSS model is trained on extremely high quality, 16K, offline rendered images of many kinds of content. Once trained, the model is downloaded into your driver. At runtime, DLSS 2.0 takes in low resolution, aliased image and motion vector of the current frame, and the high resolution previous frame to generate a high resolution current frame. I think DLSS is one of our biggest breakthroughs in the last 10 years. Take a look at these images of Death Stranding, the latest game by Kojima-san. DLSS is sharper than native 4K and created detail from AI that native rendering didn't even show, and the frame rate is higher. Reviewers have loved DLSS 2.0. They say its quality beats out native rendering and runs even faster. You can play at 4K without a performance hit. Tensor Core effectively gives RTX a 2x performance boost. Let's look at one frame trace of a game to see the processors of RTX in action. Adding ray tracing to games dramatically increases the computation workload. Using shaders to do ray traversal and object intersection reduces the frame rate. We added the RT Core, which reduces shader workload by 60%. RT Core offloads the shaders by doing the ray triangle and ray bounding box intersection calculations. Using the same methodology as Microsoft Xbox, the RT Core is effectively a 34 teraflop shader.
and Turing has an equivalent of 45 teraflops while ray tracing. Even with RT Core, the amount of time consumed is significant. So RT Core and shaders have to run concurrently. Even then, 20 milliseconds is only 50 frames per second, and still a step back in performance relative to previous generations. This is where the Tensor Core and DLSS come in. भाई और Rendering कम कर to a दिया lower इन्होंने टेंसर resolution, कोड डाल के then using AI Well, and I'm not- super fast Tensor Core to effectively पहले double तो frame rate. 50 ms Now frame you rate can get ray फिर tracing 20 and ms high resolution फिर 12 and high ms frame rate at the same time. That's the magic of the three processors of RTX. Turing was our first generation RTX GPU, combining ray tracing, programmable shading, and AI. The flagship Turing had a ton और of processing टेंसर power, कोड वाला था 11 shader ये teraflops, जो 23 चल रहा 34 है RT उसकी teraflops, बात है and 89 tensor teraflops. Let me show you our new RTX GPU. Ampere is a giant leap in performance. Ampere does 2 shader calculations per clock versus 1 on शेडर Turing. डाल दिया इन्होंने 30 कौन shader शेडर teraflops compared to 11. Ampere doubles ray 30 डाल triangle दिए intersection 11 throughbut. 1.7 Ampere's RT को core बढ़ा दिया delivers 58 RT teraflops compared to Turing's 34. And Ampere's new Tensor Core automatically identifies and removes less important DNA weights. And the new Tensor Core hardware processes the sparse network at twice the rate of Turing. भाई 2.7 238 tensor flops भाई compared to 89. Ladies and gentlemen, 7 ज्यादा Nvidia's new Ampere GPU, our second generation RTX, 28 billion transistors built on Samsung 8N Nvidia custom process. All three processors double rates over Turing, a triple double. It connects to Micron's new G6X, the fastest memories ever made. The days of just relying on transistor performance scaling is over. Yet Ampere is an incredible 2 times the performance and energy efficiency of Turing. At भाई Nvidia, we use every 1.9x engineering lever approx to squeeze every drop of performance out of the सुना system. है approx From architecture, ना custom मान process design, 1.9 circuit design, logic design, क्या पा packaging, रहा है custom SerDes I/O, memory, power and thermal design, PCB design, software and algorithms. Thousands of engineers per generation, billions of dollars. Full stack engineering and extreme craftsmanship is the hallmark of our GPUs. Our performance, energy efficiency, and low power are all world class. And real application performance highlights Ampere's new RT core. The more ray tracing is done, the greater the Ampere speedup. Ampere ये RT core doubles ray intersection गैप देखो processing. भाई Its ये ray tracing is परफॉर्मेंस गैप processed देखो ब्रो concurrently with shading. हाफ से And भी Ampere can अबव render 50% cinematic से images with अबव motion blur, 60% 8 समथिंग times और faster गेम than में तो Turing. Let's take a 100% look से at अबव Ampere जा in रहा है action. भाई At our kitchen GTC a few months ago, we showed Marbles, the world's first fully path-traced, photorealistic real-time graphics. It was running on our highest-end Turing Quadro RTX 8000. Turing was doing 720p, 25 frames per second. Today, we're going to run an enhanced version of Marbles with even more special effects, and it is running at 1440p, 30 frames per second, over 4 times the performance. Ladies and gentlemen, मैं पिछला enjoy जेन Marbles चला at रहा night. था 25 fps में 1440p में 30 fps के बाद ओके में भाई ये चला रहा है 30 fps वो 720 में 5 fps बहुत पावर बैंक है ब्रो क्या भाई 50% कुछ होता है ब्रो बड़े लोग क्या बड़े लोग भाई देखने में क्या जाता है इतने पैसा लगता है क्या By the way, welcome to the stream. Really appreciate it. Marbles is entirely path traced.
No rasterization, all real फुल time. स्क्रीन करो वीरो कर देते हैं भाई. There are hundreds of area lights, including spherical area lights. There's no pre-baking, everything is dynamic. क्वालिटी बढ़ाएं. The depth of field is film quality and beautiful. Everything is dynamic. Diffuse GI, all dynamic. There are hundreds of rigid bodies, 80 million triangles. Materials are physically accurate, physics simulation and volumetric rendering in real time. DLSS 2.0 is doing the super resolution and AID. More than 4 times the performance. And Ampere even did area lights and depth of field. मेरी giant झलक दिख performance रही है center. भाई. ये भी सही है. Today's games are giant worlds, indoor and out, with photogrammetry, dense geometry, and lots of characters. Games are over 200 gigabytes and getting bigger. This is like 50,000 songs or 400 hours of streaming video. Games have pushed PC I/O and file systems to the breaking point. CPUs copy files from disk and decompress the game image. This is fine when the storage system was slow, 50 to 100 megabytes per second. Now with Gen 4 PCI Express and solid-state drives, PCs can transfer data at 7 gigabytes per second, 100 times faster. CPU copying data to memory and decompressing game images is now the bottleneck. Decompressing data from 100 megabytes per second hard drives. Decompression bottleneck हेलियो भाई. However, कितनी decompressing स्पीड from बढ़ा 7 दी हेलियो. gigabytes per मजाक second कर रहा है. SSDs on PCIe Gen 4 takes over 20 CPU cores. Today, we're announcing Nvidia RTX I/O with 3 new advances. New I/O APIs for fast loading and streaming directly from So we SSD stream to by. GPU. Don't forget to hit the like and subscribe GPU button. lossless Every like, decompression. share, and subscribe will be And collaboration with appreciated. Microsoft on direct storage for Windows that streamlines the transfer of data from storage to GPU memory. With Nvidia RTX I/O, vast worlds will load instantly. Picking up where you left off will be instant. This is a very big deal for next generation gaming. Let me show you Ampere in action in one of the most तुम कौन anticipated से games of डिस पे 2020, हो? CD मैं Projekt किसी Red डिस पे नहीं हूँ Cyberpunk. ब्रो. मैं This बंद trailer कर is रहा called Scenes of Cyberpunk RTX. It shows ray trace reflections, diffuse illumination, shadows, ambient occlusion, and DLSS 2.0. Enjoy. साइबर पंक का ये दे रहा हूँ. ट्रेसिंग. साइबर पंक तो चुम्मा गेम है. कैप्शंस तो देखो अलियो. Ladies and gentlemen, our new flagship GPU, the Nvidia GeForce RTX 3080, powered by Ampere, second generation RTX architecture. 3080 आने वाला भी. ये अपनी पूरी स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया. 980 पर ये फ्लैगशिप 1080 इनका सबसे फ्लैगशिप रहा. अब 2080 आएगा. अब आएगा 3080. Second gen RTX 28 billion transistor 1.9 pulse improvement. Improvement 9 Gbps 760 Gbps.
this and pretty tops. Jealousies on पर dual मतलब दुगनी रेट रेसिंग ये ओरिजिनल थर्मल डिजाइन भाई ये पिक्चर लीक हुई थी ये पिक्चर मैंने देखी थी लीक हुई थी आगे भी एक फैन लगा पीछे एक फैन लगा है थर्मल डिजाइनिंग में चेंज किया है इन्होंने टेम्परेचर को इम्प्रूव करने के जितना हाई परफॉर्मेंस सीपीयू भाई चुम्मा लग रहा ब्रो Honda edition है The Nvidia RTX 3080. I have one right here. Let me show it to you. दिखा रहे हैं रियल लाइफ में It is beautiful. Look at this. The RTX 3080. It is wonderfully crafted. It's going to look beautiful on your थर्मल PC, डिजाइन इन्होंने बहुत and it lights up. अब कुछ कॉन्सेप्ट हो Now let me मुझे tell नहीं you about पता some of इस the बारे other में exciting technologies inside. देखते हैं Turing used G6, the fastest memories at that time. The industry thought that was the limit. For Ampere, we had to push through that limit. Working with Micron, we designed the world's first memories with PAM4 signaling, pulse amplitude modulation, with 4 voltage levels that encode 2 bits of data each, 0001, 1011. Each voltage step is only 250 millivolts. So in the same period of time, G6X can transmit twice as much data as G6. PAM4 is extreme signaling technology, and it's just becoming used in high-speed networking. The Ampere thermal architecture is the first ever flow-through design, working harmoniously with PC chassis cooling system, pulling in cool air from the outside, flowing through the GPU, and pushing hot air straight out the chassis. To allow room for a fan to flow air directly through the module, our engineers architect a super dense PCB design that is 50% smaller than previous, while adding the bigger Ampere GPUs, HDMI 2.1, PCI Express 4.0, and G6X. There are 2 independently controlled fans. The bracket front fan pulls cool air from the bottom and pushes the heated air out through the graphics card brackets. A backside pull-through fan passes cool air over the fins of the heat pipe and directs the hot air to the top and back of the chassis to be exhausted by the system fan. The 3080 flow-through system is 3 times quieter and keeps the GPU 20 degrees cooler than the Turing design. It can cool 90 watts more than Turing. The generational leap is ultimately the most important factor of new GPUs. A significant technology advance is needed to inspire content developers to create the next level of content and for the install base to upgrade. Let's see how the 3080 stacks up to previous generation architectures on the latest graphics intensive games. 3080 is faster than 2080 Ti. 3080 is twice the performance of 2080. भाई हेलो 3080 2080 Ampere is the biggest generational leap we've ever had. approx Ladies and gentlemen, 100 Nvidia GeForce RTX 3080, our new flagship GPU, powered by Ampere, our second generation RTX GPU architecture. Incredible amounts of processing in the shader, RT ray tracing core, and Tensor Core for processing AI. 10 gigabytes of G6X, twice the processing power of 2080, and at the same price, starting at $699. Available September 17th. One of our most popular GPUs is the 70 series. 970, 1070, 2070 were all hugely popular. You're going to love the new RTX 3070. Faster than the 2080 Ti. हेलो 3070 2080 Ti से faster है $1,200. Ladies and gentlemen, the new GeForce RTX 3070. Let me show it to you. It's a work of art. 20 shader teraflops, 40 RT teraflops, and 163 teraflops Tensor Core for AI processing. With 8 gigabytes of G6, RTX 3070 is faster than the $1,200
RTX 2080 Ti, 2080 Ti तो starting at $1200 $499, भाई available in आपसे October. भी कम में उससे ज्यादा Every generation, परफॉर्मेंस we है pack लियो in our best ideas to 2080 increase Ti performance 1200 while introducing new $1200 में features लॉन्च that हुआ था enhance ये image $500 quality. में Every couple of generations, 50% से भी the डाउन stars अप्रॉक्स align, as it 60% did with ऑफ Pascal, उससे and we get ज्यादा a परफॉर्मेंस giant generational leap. Pascal was known as the Yeah. perfect 10. Pascal was a huge success and set a very high bar. It took the super family of Turing to meaningfully exceed Pascal on game performances without ray tracing. With ray tracing turned on, Pascal, using programmable shaders to compute ray triangle intersections, fell far behind Turing's RT core. And Turing with ray tracing on reached the same performance as Pascal with ray tracing off. On a technical basis, this was a huge achievement. The images are far more beautiful, and reflection and shadow artifacts are gone. But gamers want it more. They want every generation to be more realistic and higher frame rate at the same time. So we double down on everything. Twice the shader, twice the ray tracing, and twice the tensor core. The triple double. Ampere knocks the पे ray daylights out of tracing on Pascal on ray करके tracing. 60 And even with ray 60 tracing plus on, FPS crushes Pascal on frame 38 rate. To all my Pascal gamer friends, it 144 is पे safe to 100 upgrade now. FPS Amazing ray tracing games are coming. Activision and developer Treyarch are launching a new Call of Duty on November 13th. It's a masterpiece and it looks incredible. There are dynamic lights, ray tracing, shadows and ambient occlusion, DLSS World War 2.0, पे and Nvidia Reflex super low latency technology. The last Call of Duty sold an amazing 30 million copies. Activision put together this trailer of never before seen footage. Enjoy. Let me talk to you about one more thing. Several years ago, we started building the Titan, pushing the GPU to the absolute limit to create the best graphics card of that generation. It was built in limited quantities only through Nvidia. The distribution was limited. The demand surprised us. Creatives were making 4K movies, rendering cinematics. Researchers built workstations for data science and AI. Bloggers built broadcast workstations. Flight and racing simulation fans built sim rigs. There is clearly a need for a giant GPU that is available all over the world. So we made a giant Ampere. Ladies and gentlemen, the RTX 3090. दिखाया ना सबसे प्यारी चीज Come here, Papa. Alrighty. 3090 is a beast, a ferocious GPU, a BF GPU, 36 shader teraflops, 69 RT teraflops, 285 tensor teraflops, and it comes with a massive 24 gigabytes of G6X. और चलिए It comes with a silencer, a 3-slot dual-axle flow-through design, $300 10 times quieter, and keeps the GPU 20. 30 degrees cooler than the Titan RTX design. But there's more. The 3090 is so big that for the very first time, we can play games at 60 frames per second in 8K. 8K में This is 60 insane. plus Because it's impossible for us to show you what it looks like on the stream, we invited some friends to check it out. Roll the clip. 8K में Hi. This is Andy and this is Tim. Woo! I've never been more excited to do anything. Oh! Are you kidding me? ray tracing के साथ Oh my god. No way. This is f***ing incredible, dude. This is amazing. Holy
The resolution on this is silly. My God. You can see wear and tear on the treads. Look at this. Why is it so detailed? All right. Move fast and shoot things. This is 8K, sir. I can see everything. Oh, I need to shoot you, though. Not a whole lot of people have seen something like this. This is so realistic. I feel like I'm really in battle. This is insane. I want to look at the pretty things. There we go. Dude, the ray tracing is insane on this. These are the sizzle reels that you see. This is basically hacks. And then it's like, it'll never look like that. But it does. I'm like looking across the vistas, the grand vistas that are happening right now. Holy shit, look at this. This feels like a Disneyland experience. Oh, it is so smooth. It's butter. Oh, it's smooth as shit, dude. I can't believe it's not butter. I mean, this is game changing. There's no other way to put it. My mind is blown, dude. Wow. It's been 20 years since the Nvidia GPU introduced programmable shading. The GPU revolutionized modern computer graphics. Developers jumped on and invented clever algorithms, like shaders that simulate realistic materials, or post-processing effects for soft shadows, ambient occlusion, and reflections. Developers pushed the limits of rasterization beyond anyone's expectations. Meanwhile, Nvidia GPU processing increased a stunning 100,000-fold. Gaming became a powerful technology driver. Gamers grew to billions, and gaming pushed into all aspects of entertainment and culture. If the last 20 years was amazing, the next 20 will seem nothing short of science fiction. Today's Ampere launch is a giant step into the future. This is our greatest generational leap ever. The second generation Nvidia RTX, fusing programmable shading, ray tracing, and artificial intelligence, gives us photorealistic graphics and the highest frame rates at the same time. Once the holy grail of computer graphics, ray tracing is now the standard. And Ampere is going to bring you joy beyond gaming. Nvidia Reflex to improve your response time. Nvidia Broadcast turns any room into a studio. And Omniverse Machinima turns you into an animated filmmaker. We are super pleased with 3070, 3080, and 3090, the first three members of the Ampere generation. You're going to feel a boost like never before. I can't wait to go forward 20 years to see what RTX started. Homes will have holodecks. We will beam ourselves through time and space, traveling at the speed of light, sending photons, not atoms. In this future, GeForce is your holodeck, your lightspeed starship, your time machine. The camera. Machine. In this future, we will look back and realize that it started here. Thank you for joining us today, and to all of our fans for celebrating the arrival of Ampere. इन्होंने दिखाया ही नहीं। ये भी सही। वहाँ पे नेट नहीं गया, ये खत्म। ये भी ठीक है भाई। भाई नेट हगने लगा।
PUBG, PUBG, PUBG. Right. Minecraft. I got one. Welcome to my kitchen. I hope all of you are staying safe. We're going to talk about an amazing GPU today. Modern GPUs are technology marvels. It is the engine of large industries from design, cloud AI to scientific computing. But it is the gamers and their insatiable demand that is the driving force of the GPU. Pulling their GPUs to create the largest distributed computer ever. 1 million gamers united to counterstrike the COVID-19 coronavirus. The result was 2.8 exaflops. 5 times the processing power of the world's largest supercomputer to simulate the virus. Folding at Home was able to simulate 100 milliseconds, a tenth of a second in the life of the coronavirus, and capture the moment it opens its mouth to infect a human cell. Scientists believe this is also its moment of weakness. Thank you all for joining this historic fight. We're going to talk about computer graphics and the work we're doing to push the boundaries. We love computer graphics and have advanced it incredibly in the time of Nvidia. As the technology advanced, the expressiveness of the medium has made graphics an invaluable tool to help us understand our world, create and explore new worlds, tell stories that inspire us. From science to industry to the arts, computer graphics has made a profound impact on the world, and for that, we are privileged to have contributed. We're going to talk about gaming and the infinite ways that gaming is expanding. GeForce PC gaming is large and thriving. Its open and rapidly advancing technology, combined with the amazing creativity of the community, makes magic. Anyone could be a broadcaster now. Add a GeForce and you have a personal broadcast station. Pros stream their practices. Experts stream tips and tricks. Friends stream to friends just to hang out. There are over 20 million streamers. Games have become a new art medium. In Minecraft, gamers can build their work of art. Machinima artists create cinematics made from game assets. Tens of millions are using Valorant. सूसू आ रही है बहुत तेज। बस 2 राउंड और हारने रुको। Leo. हाँ क्या है स्टेटस बताओ। इतना ज्ञान लेकर आ रहे हो। एकदम कत्ल काम कर दिया Nvidia ने भाई, ना पड़ेगा। लग जाएंगे फैमिली से। अरे यार पता नहीं क्या ही चेक करते हैं यार ये लोग बाय गॉड। हेलो गेमर, तूने देखा ना? क्या क्या? अरे मतलब 3090 भाई मत पूछो, एकदम दिमाग खराब। 2080 से भी सस्ता है भाई, 2080 Ti से सस्ता है 3090। नहीं 3090 $1500 का है, $1500 का महंगा है, उससे 300। अरे हाँ वो 3080 2080 है। हाँ भाई Ti से कम है भाई 3070 2080 Ti से बेटर है और $500 में है वो, लगभग 60% ऑफ। हाँ 60% ऑफ भाई, $1200 में 13 नहीं अबे नहीं बे, जो RTX 2080 Ti है वो $1200 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये जो 3070 लॉन्च हुआ इन्होंने किया है वो $500 में किया है, जबकि वो 2080 Ti से बेटर है। ये सीन है। और 8K गेमिंग 60 FPS मतलब वो तो 3080 करेगा भाई। तो RTX सस्ता नहीं हुआ?
ये सस्ता अरे माल हाँ, अभी RTX सेकेंड जनरेशन है ना। गिरेगी, अभी गिरेगी अभी मार्केट गिरेगी, भाई। अभी वो थोड़ी ना बताएगा कि सस्ता होगा कि नहीं। हाँ अरे बिकेगा नहीं इतना, मैं बोल रहा हूँ, मैं बिकेगा नहीं। मतलब अच्छा गेमिंग करवाएगा, जिसके पास बजट है वो खरीद लेगा। भाई बहुत प्राइस ड्रॉप होंगी देखना इनसे। नाइस। जो करंट है ट्यूनिंग आर्किटेक्चर से बहुत डाउन होगी भाई। जब अगर भाई यहाँ है 40,000 में 1 लाख का परफॉर्मेंस मिल रही तो कौन 1 लाख खर्च कर लेगा भाई, बैक स्टैब हो गया। हेलो द अल्फा लॉल। फक। भाई। लेकिन 30-60 इन्होंने नहीं देखा है यार, बहुत बेकार लगा मुझे। और अल्फा में आ रहा हूँ। वो बात हुई थी, वो कह रहे थे हम सीधा गेमर के घर पे भेजेंगे, 3060 फ्री दिखेंगे। अरे एक बात अब तो बता, बढ़िया है। $500 कितना हो गया? $500 35,000। तुम खरीद लोगे, इतना हो 35,000 गया। रुपए का 3080। 3070। अबे 500 क्या? तो वो तो 3080 कितने का मिलेगा? हाँ हाँ इंटरनेशनल प्राइस है भाई। हाँ तो वो बढ़ इंडिया के में हो आते जाएगा। आते 45,000 हो हाँ। जाएगा वो। अरे चल वो भी है तो 3080 कितने का होगा? 3080 वही $3080 $1,200 का है। 400 डालो। नहीं 400 या $500। नहीं बे, $800 का है। 3080 800 कह रहा हूँ 800 मैं। 800 800 800 800 तो वही हो गया तेरा। नहीं रे, वो 60,000 का। 28 आते लाइन में। आते 70,000 का ही हो जाएगा जितना 2080 है। हाँ वो 2080 सुपर। हाँ। हाँ तो ओवरऑल आखिरी में बताया क्या इन लोगों ने, ये बताओ। बताया ये है कि कान फाड़ दी। अब मतलब 8K गेमिंग कर सकते हो तुम। हाँ 3090 पे, हाँ वो भी 60 प्लस FPS में 60+ स्ट्रीम FPS। भी हो जाएगी धांसू। नहीं नहीं, हो 8K जाएगी। पे स्ट्रीम नहीं 8K होगी पे भाई। नहीं। 8K में स्ट्रीम नहीं, मतलब भाई स्ट्रीम भाई ड्यूअल पीसी का ही काम करेगा वो भाई 3090 हेलो तो भाई। हेलो 4K और इस 4K बार में 100 प्लस नहीं, FPS देगा वो। और मतलब इस बार ना ग्रीन स्क्रीन का जरूरत नहीं लगेगा हाँ अगर तुम हाँ। वो तो कैमरा। उनका सॉफ्टवेयर है ना, OBS भी अपडेट डालेगा। विनोद कौन आ गया? अरे विनोद अरे अपना अपना। हाँ बोलो बोलो। हेलो खेल लो। हाँ हाँ अबे ठीक है ठीक है। क्या कह रहे हाँ हैं? चालेल चालेल चालेल। किसने भेजी थी रिक्वेस्ट? Match found. भाई 3090। भाई लेकिन वो अबे महंगा अभी है, पर वो 1500 मार्केट में डॉलर आने में भी टाइम भी तो अरे लगेगा। और क्या आएगा? यरुगा मैं ओमन ले रहा हूँ, मैं ओमन ले रहा हूँ। अरे ब्रो मैं क्या खेलूंगा फिर। मैं रेज खेल लूं क्या? अच्छा फिर वो रेस ले रहा है क्या? फिर ले लो ले लो ले लो ले नहीं लो। मैं फीनिक्स ही ले रहा हूँ। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, बोलो। तो आने में कितना, मतलब कब लॉन्च होगा इंडिया लगेंगे में? भाई, मेरे हिसाब से तो लगेगा भाई, ये साल तो अभी लग जाएगा। सितंबर सितंबर। नहीं इंडिया में अक्टूबर लास्ट तक आ पाएगा। हर कार्ड जितने भी उन्होंने दिखाया है अभी। अरे वो आए ना आए, 2080 सुपर सस्ता कर दे बस, अभी ले लेंगे। कितना 2080 सस्ता सुपर करेंगे अभी भाई? मेरे लिए enough है यार। भाई कितना सस्ता करेंगे ये बताओ? 50 तो कर दे, 50,000 तो कर 50 दे। चोमू हो हेलो। 40 में तुम्हें 3070 मिलेगा 2080 Ti के बराबर। तुम 30 तो और कितना करेंगे? 30,000 कर देंगे उसको। नहीं करेंगे ना, 30,000 क्यों करेंगे? डिसकंटिन्यू कर तो देंगे। इनकी अच्छा डिसकंटिन्यू कर देंगे। हाँ और ये हो। क्या, इन्होंने 1080 Ti 1080 नहीं 1080 डिसकंटिन्यू कर दिया। हाँ कर दिया ठीक है। अबे जिन्होंने पीसी बनवा लिया 2080 उनका क्या होगा बे वो यार? चोमू हो गए बस, और क्या। उनका इतना भाई महंगा पीसी बना। इसी वजह से 3070 तो टक्कर दे देगा 2080 सुपर की आराम से। 2080 Ti को टक्कर दे मैं देगा। बता रहा हूँ सामने पूरी टीम है, अच्छा मैं मैं पूरी बता 3070 रहा ले हूँ। लूंगा और क्या करूंगा। और सस्ता आ रहा है ना 50-60 हजार का। मैंने $500 जल्दी खरीद के कोई गलती करी क्या? अरे नहीं तुमने। नहीं अभी तो लो एंड जीपीयू नहीं आएगा, अभी अगले साल आएगा। है ना? अरे मतलब कि ये जो लो एंड जीपीयूज है, मतलब 1080 वगैरह उसमें भी वो चेंजेस ला रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि उसमें भी चेंजेस ला रहे हैं, मतलब ड्राइवर चेंजेस। अबे हाँ 1050 के लिए भी ड्राइवर चेंज रिफ्लेक्स का नया आ रहा है कि अब मुझे वैलोरेंट में बहुत अच्छे लेटेंसी मतलब वो जो उन्होंने बोला है कि एक लेटेंसी होती है गेमिंग के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारा होता है ना, तो इसको कुछ करेंगे, मतलब ड्राइवर के कुछ डाल के दे रहे 1050 तक सपोर्ट मिल रहा है। तो 1660 मिलेगा नहीं मिलेगा? वो तो मिलेगा, ये ऑब्वियस है। 1050 कितना नीचे सबसे लो कह एंड रहा का 1050 इतना कम। अच्छा तुमने लोअर बोला है ना, ठीक है। हाँ
भाई इन्होंने 1660 में तो RTX का सपोर्ट दे दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ तुम बहुत माइनक्राफ्ट पहले दे दिया था इन्होंने। गैराज 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 आ गैराज रहा हूँ, आ रहा जल्दी आओ, शॉर्टी है मेरे पास। हूँ। नाइस। अबे गेमर घुसना नहीं है, गेमर हेलो, गेमर घुस मत। हटो 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 चेतन भाई। अबे यहाँ पीछे देखो से, वाइपर आएगी। पीछे से आ गया। अच्छा अपना है क्या? बैक स्टेप पे। अबे हेलो, पीछे से आगे क्या कर रहे हो भाई? अरे बोला तो मैंने पीछे से आ गया। याद होती है यार। हद क्या होती है, मैंने बताया पीछे से। अबे तो तुम्हें पता है पीछे से यार, केयर दो ना उस चीज की। बी पे है ना। अरे मुझे मार ही दिया तो हम क्या कह रहे थे उससे। यार भाग दिया। प्लांट उन्हें करना है। मेरी पिंग गाइस, मेरी पिंग घूम के आ रही है, घूम के आ रही है, घूम के आ रही है। बी पे प्लांट हो गया। डिफ्यूज के अंदर बैठ जा, डिफ्यूज के अंदर बैठ जा, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं स्मोक करो, स्मोक करो। मेरे पे काय का स्मोक है बे? अरे हेलो, अबे पीछे से मारो, पीछे मारो, पीछे 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 पीछे। ओ भाई मेरा गेम क्रैश, मेरा गेम क्रैश, नाइस। मेरा गाइस मेरा गेम क्रैश। आओ दोबारा आओ, दोबारा आओ। वो टाइम वेस्ट करेगी पता है अल्फा। भाई आज बहुत ही गंदा से ही शॉट के पैकेट सामने आई ना। लॉस। भाई मेरा पैकेट लॉस। हाँ मैं गेम बट मेरा पैकेट लॉस बहुत है भाई। मस्त वाला गेम भाई 500 की टीम। तो अल्फा एक बात बताओ, जो वो ड्राइवर अपडेट आ रहा है उससे फायदा क्या मिलेगा? एक बार थोड़ा ऐसा समझाओ कि मैं समझ जाऊँ सही तरीके से। अरे मतलब कि अब तुम किसी बंदे को यहाँ मार रहे हो तो अचानक से, समझ रहे हो, वो स्मूथनेस नहीं मिलती कभी कभी, तो इसमें कुछ होगा। FPS मतलब बढ़िया आएंगे। क्या पता मेरी स्ट्रीमिंग के लिए भी कुछ अच्छा कर दे। ये लोग गैराज गैराज से आ रहे भाई इन्होंने जो अपना ब्रॉडकास्ट पूरा सी आ गया। बी पे रे वो है, जेट है, बी पे जेट पूरा है, सी आ गया। बी पे जेट, बी पे जेट, बी पे जेट पूरा सी आ गया। अब ये है, और तुम से पूछो भाई, इधर है गैराज में लोग हैं, मैं कोई अभी कुछ नहीं कर सकता। तुम घुसो तो सही गराज से, गराज दे भाई, गराज में यार। अरे यार अल्फा यार, मैं कह रहा हूँ जेट है, तुम्हें नहीं कह रहा तो घुसने को इन चोमों को। नेम से बोला करो यार। नाइस गेमर। इधर ले लो स्टूडेंट से। हील कर, हील कर, हील कर, हेलो हेलो हील। घुस मार भाई हेलो हक दिया मैंने। मैं फीलिंग अरे एक बैक स्टेप आ रहा था। जेटी तो है। Check. Charges? Check. Brakes? Reloaded. Nowhere in sights. भाई इन्होंने 3060 नहीं देखा है। गिटार तुम कैसा कार्ड है, कार्ड कैसा है दिखाया नहीं? नहीं 3060 का कुछ बताया नहीं। नहीं लुक वाइज कैसा है कार्ड? बहुत अच्छा बता, उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। भी कर रहे हैं लोग, भी कर रहे हैं। गैराज ए पे आ गई, स्पाई गिरा ए पे। आ रहा हूं। एक अंदर है, अंदर है, बॉल बना दी। ये खत्म तो है, ये इसका मैं टॉक्सिन का वेट कर रहा हूँ। ये भी ठीक है। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, तोड़ो इसे। क्या ही कर रहा हूँ मैं, हेलो। घुसो अंदर, बंदा है। One enemy remaining. नाइस। अबे हेवन 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 है, कहाँ है? एक बंदा डिफ्यूज, एक बंदा डिफ्यूज कर। बहुत अल्फा उसकी ओडन लो, अल्फा उसकी ओडन लो, अल्फा उसकी ओडन लो। क्या लो चटको दे तुम। आ गए, आ गए। आज फ्री हो गया।
3080 Ti देख के आ गए? देख क्या आ गए? नया ग्राफिक कार्ड आ रहा है भाई आ गया 3090 लॉन्च हो गया। भाई ग्राफिक कार्ड आ गया। मैंने तो पूरा स्ट्रीम किया उसकी। मैंने भी किया, मैंने भी थोड़ा देरी कर दी ना, क्या मतलब कि जल्दी कर दी लेने। अबे नहीं अरे लोगों नहीं ने नहीं नहीं बोला नहीं, था, इनका अभी बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने 3060 और यार तो एक नहीं बात अभी। बताओ, इनकी प्राइसिंग मुझे तो पैसे की नहीं लगती यार। 3070 कितने जो आ रहा है, 3070 50,000 के आसपास मिलेगा, $500। और बस? वो हाँ, और वो 2080 Ti से ज्यादा का वो है, अच्छा ओ है, भाई, उसके बराबर का है। वो तो भाई बहुत बिकेगा, पता है, बहुत बिकेगा। मैं वही लूंगा भाई उन्होंने सेम प्राइसिंग एक रखी है जन पिछले गराज जा रहा है, एक जनरेशन जन की गराज जा तरह। रहा है। अरे काहे का गराज देखा तुमने? मैं हूँ गैराज पे बोला। अबे बी प्लांट हो रहा, बी प्लांट। हेलो हाँ क्या कॉम्पी? हाँ कॉम्पी चल रहा है इस मैच के बाद। हाँ हाँ, अरे अबे नाइस हट से यार, यार, मारो अरे नाइस तो। यार, अरे नाइस यार। बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा शॉट, बहुत प्यारा ब्रो। हाँ None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? ये ना सी करेंगे इस बार बोलो। हंसते में निकल गया। अगर लोअर एंड निकाल रहे होते ना फिर वाली बात थी कि हाँ मैंने थोड़ा जल्दी अरे बुक कर दिया। एक बात। अरे नहीं यार, लेकिन फिर भी एक बात बताओ, 20-21 हजार में तो कहाँ ही आता है यार लोअर एंड। नहीं आ जाता है, इन्होंने पूरी सेम प्राइस रखी है, 1 रुपए बढ़ाया नहीं है। नहीं लोअर एंड तो भाई मुझे लगा 2-3 साल बाद ही आएगा। नहीं 1660 यार है भाई, तुम पे 1660 सुपर लीग आया ना तुमने? हाँ हाँ तो हाँ, गराज 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 कोई गराज यहाँ पर आएगी जैक। भाई इसी कर दिया उन्होंने, पीछे से भी और आगे से भी। एक और है, एक और है। मत सी जाओ, कोई एक बंदा सी जाओ। गई आ रहा हूँ, एक गराज से जा। अरे नाइस, मैं मारेगा उसे। सी पे बहुत प्यारा। अरे आगे ओडिन पड़े लेफ्ट में ओडिन है। उठा दे, अचानक से भूत चढ़ गया मैं, है ना। Sorry, ears still ringing. अरे पापा को मारोगे। Can someone get this? Thank you. ठीक है मैं बी जा रहा हूँ। नहीं मैं गैराज देखता हूँ मैं। यार मुझे माउस पैड लेना पड़ेगा। अच्छा अल्फा गैराज देख। अरे अल्फा थोड़ा बड़ा ही ले, मतलब कि मैं पूरा कीबोर्ड तक का लूंगा। अरे लूंगा भी यार, और उसकी जगह भी बहुत खर्चा कर लिया है। यप ए हो रहा है। बी पे भी हैं लोग, अपनी चीजें ये लोग। छोटे बंदे ये मारे ये रहो मेरे साथ। अब एक कॉल भी तो नहीं दे रहा अपना ये। तुम लेफ्ट से स्प्लिट खेलना है ये। नाइस मैं वाले गैराज देख कर आ रहा हूं। पे पात दिया उसने, पात दिया। ये कहां बना है? अबे यहीं प्लांट कर रही है वो। आ रहा हूं मैं, ये आ रहा हूं। नाइस। अरे बहुत ही प्यारा। अरे बहुत ही प्यारा। भाई इन्होंने लॉल साले मेरा किल ले लिया। मैं अल्फा तेरी स्ट्रीम अटक रही थी पहले। I'm kind of feeling myself right now. Y'all better keep up. भाई रियली एक भी ड्रॉप नहीं हुआ फ्रेम। एनवीडिया ने फाड़ दी सब। पहले हो रही थी, मैंने जब चालू किया था। अरे वो कभी होता है बिट रेट्स की वजह से। और सोचा मेरा थर्सडे को अराइव हो रहा है, और थर्सडे को इन लोगों ने 3060 की अनाउंसमेंट कर दी। फिर तो क्या हो जाएगा, आप ले लेंगे क्या 3060? अरे थर्सडे को जब भी 40,000 से नहीं 30,000 तक आएगा। 30,000 रिटर्न कर सकते हो। अबे पर आया नहीं है ना, कर देंगे तो फिर भाई आएगा। बहुत टाइम लगेगा। 3060 के बारे में कुछ बताया नहीं। आने के बाद तुम रिटर्न कर सकते हो, 15 दिन का टाइम होता है। 10 दिन 15 दिन में आ जाएगा वो। यहाँ देखो सारे हैं स्पाइक हो रहा। स्पाइक यहीं है, स्पाइक इज देयर, स्पाइक इज एट बी। क्या कर रहा है गेमर? हक दिया भाई। अबे विदाउट एडीएस था, मैं जानता ही एडीएस में क्या हक था। नाइस। स्पाइक को प्लांट हो रहा है। हेलो
नाइस पीछे 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 तुम्हारे पीछे 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 वो अरे दिखेगा पीछे विंडो पीछे विंडो तुम्हारे विंडो विंडो मेरे को मारा है उसने मेरे को मारा है तुम अंदर जाओ ना तुम कुन्नड़ में बैठो वो कुन्नड़ में ये ले रही है ऑप है उसके पास ऑप है मारो नाइस बची गए भाई चेतन बिल्कुल चूतोड़ा तो मारता गोली दीदी चुम्मेश्वरी Never had a doubt. Let's keep it going. दो पैर के बीच में से निकल गई गोली, पता है? दो पैर के बीच में से उसको छूती हुई निकल गई गोली वो बच गया ना चेतन भाई। अरे वो तो देखो मैं शैडो हूँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है कुछ भी मतलब कि अंतड़ियां दिख रही हैं तो इसका मतलब खोखले हो भाई कभी ओमन यूज करोगे ना, गेमर ने करा होगा, पूरी मम्मी के जैसे मम्मी होती है ना पूरी पट्टियां बंदी होती है, ऐसे ही है। वो कौन सी गेम थी? कोई शरीर नहीं है भाई इस बंदे का, इस बंदे का कोई शरीर अरे नहीं कर ही नहीं रहे भाई। यहाँ पर गई है, यहाँ पर से उड़ती हुई जाइए वो भाई भाई बता दिया भाई। जेट है बे वो। उड़ती हुई तेज पहली बार देखी ना। जेट थी बे वो है। तो उड़ती भी आती है। स्टार्ट मेरे सामने। अरे सुया भाई हमें ना मारने दो ठीक है भाई, हम यहाँ किस लिए आए? अल्फा अल्फा कौन सी सेल्स देखी तुमने जो उड़ रही थी पहले तो ये बताओ। अरे कभी कभी वही इधर तो बोल रहा हूँ, मतलब कुछ भी मैं सोचने लगा कौन अरे सी गेम अरे होती है। डैनियल हाँ बोलो बोलो। OBS पे अगर चैट देखनी है ना, पर तुम्हारा तो ड्यूल मॉनिटर है नहीं है अगर देखनी हो ना, मैंने कर रखा है वो स्ट्रीम एलिमेंट्स का करो भाई, एक नंबर ऑफ चैट्स दिख रही है, कोई अलग से वो नहीं खुल रहा। पता कितना हो रहा है? कितना? 8% बस 8%। ये भी सही तुम्हारा है। डुअल मॉनिटर है ना अल्फा? हाँ तो सेटिंग तो तुम्हारे लिए है ना, हमारे लिए थोड़ी है। अरे यार कुछ स्ट्रीम लैब्स को ना मोबाइल पे भी आ जाना चाहिए अब। है तो मोबाइल पे डेक है स्ट्रीम लैब्स का डेक है, पता है? उसके अंदर तुम स्विच कर सकते हो सीन फोन से। चैट इसमें पढ़ सकते हैं हम लोग। अबे तो फोन में नॉर्मल यूट्यूब खोल के रखो ना। क्या करो वॉच टाइम भी बढ़ जाता है? हाँ हाँ ये भी बढ़ता है सच्ची में। हाँ बढ़ता है। मैं अब अपना यूज नहीं करता। जेट इज देयर। अबे 70 है हमारे पास डुअल मॉनिटर है। जेट 70 है। हाँ ने तो हेड मारी हम। नाइस। ना 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 पीछे बैक। हेलो मुझे हील चाहिए। ए से आई है वो घूम के। हील चाहिए मुझे, हील चाहिए मुझे। शक्ल तो दिखाओ। इधर ही है वो। ये भी सही है। मैंने ये द डिवीजन फोन से ली थी। चलो गेमर तुम्हारा करने गई है और रिवाइव करने गई है किसी को। गेमर ये खेल तुम्हारा नाम। हाँ मार ही लियो, जिंदगी मत खराब कर लियो अपनी, नाक मत कटा दियो। 30 seconds left. ये मैच किसके नाम है? पिछला मैच हार गए यार चेतन भाई। और अल्फा ये सही किया तुमने, पता है ये सही किया। क्या ओवरले हटा दिया तुमने। हाँ आज का पूरा गेम रुकता था ना, सारी इन्फॉर्मेशन रुक जाती नहीं रुकता। हाँ भाई इन्फॉर्मेशन रुक जाती। मैं इसलिए नहीं रखा ये ओवरले। अभी देखो ये गेमर का है, लेकिन गेमर की मतलब कि जो तुम्हारी 6 विन है सामने 2 है ना, आधी कट जाती है ऊपर। जा गेमर जा, जी ले अपनी। अबे गेमर अपना नाम बदल यार। टिपिकल इंडियन गेमर सही है यार। हाँ तो पूरा इस पे लिखना भाई हेलो। ये भी सही है, ये भी सही है। TRG लिख दे उसमें अपने हैशटैग में, अपने हैशटैग में TRG लिख दे। मैंने हैशटैग में इंडिया लिखा हुआ है। अबे टिपिकल रियल गेमर हद हो गई। मैंने अपने हैशटैग में इंडिया लिखा हुआ है IND। जेट मुझे लग रहा है मजबूर अभी आने को, हर बारी भी आ रही भाई, हर बारी। गैराज पे भी 2 है। अबे मेरे पे क्यों वो कर देते हो तुम? फ्लैश बात दियो सर। गैराज एग्जाम खत्म। ऑल गैराज। अरे बहुत प्योर हेड गेमर, बहुत ही चुम्मेश्वर हेड ब्रो।
ठीक है, बहुत सारा हक भी दिया। मतलब यहाँ पे अल्टी मार स्पाइक भी गैराज पे ही है। ठीक कर रहे हैं लोग। फ्लैश मत। Spike planted. One enemy remaining. बहुत ही बढ़िया। नाइस नाइस। ओह माय गॉड, ये ग्रेटली इंक्रीज होने वाला है। पता है क्या चीज होती है यार, ये मुझे लगता है इसकी इंक्रीज होने वाला है। अल्टी में ना इसकी भी फायर पावर बढ़ती है शायद। नहीं नहीं यार भाई, नहीं ये सिर्फ रन इट बैक के मतलब बस नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बस तुम जाके मतलब घुस रहे हो ना, तुम्हें कोई डर नहीं है तो तुम तुम्हारे पास 2 लाइफ आ जाती है, ऐसा समझ लो। तुम 2 लाइफ में सामने वाले को मार सकते हो। जीवन तो है, लेकिन जैसे देखो वो होता है ना, जैसे रहना की उसमें होता है कि फायर रेट बढ़ जाता है और उसके बाद डैमेज बढ़ जाता है। मुझे भी इसका लगता है कि डैमेज बढ़ता है, इसमें भी डैमेज लगता है मुझे कि डैमेज बढ़ता है यार, क्योंकि ये अल्टीज में होता है ना फिनिक्स वगैरह की, जितने बहुत लोग भाई मार देते हैं, पता है 3-3 4-4 बंदे। जेट फिर से भी आ रही है भाई, मजबूर है भाई, ये मजबूर है। वाइपर भी है पर आप नहीं, पर आप वाइपर भी मरना नहीं बीम चाहिए, है। पता है मरना नहीं चाहिए आप। अरे वाइपर भी बीम है, जल्दी आ जाओ, कोई एक बंदा बीम रेस भी बीम है। हेल्थ खा गया। बंदे स्पाइक बीम है, मल्टीपल एनिमीज। स्पाइक बीम तुमने इतने मार दिए? दो ही तो मारे हैं। अरे वाह भाई, सही है वाह। तुम ही मान लो भाई, हम तो यहाँ पर दुनिया पर हर एक गेमर का किल चुरा है पहले। लॉल वाले गेमर का किल चुरा है। Spend all. गेमर कह रहा है, गेमर कह रहा है बोल के मेरे एक्सेल प्ले, सॉरी एक्सेल प्ले। एक किल का फर्क है बस। अरे अभी तो पूरी 4 मैच बाकी है। अरे अब गेमर मारेगा एस पे एस, देखते रहो तुम। ये भी चाहिए, बहुत दिन हो गए यार एस नहीं लिया, अभी लेना मैंने आज दिन में 4 बंदे मारे। सी करने की, सी गाइस, सी गाइस, सी। ए क्यों नहीं? अबे उनकी मर्जी यार। और ये लोग भाई वाह भाई सुयश। जेट और वाइपर भाई यहाँ हो बी रहा है, करेगा। रुको। वाइपर का वो है क्या है, वाइपर का क्या है? प्लांट हो रहा है। लो बी हो रहा है, लो Spike planted. वही मार दिया उसने मुझे। 0 डैमेज। मारा है भाई, क्या मारा है इन लोगों ने इस बार। सही सही, माता आ गई इनमें, माता आ गई इनमें, माता आ गई भाई बम यहाँ फेंक के कोई फायदा नहीं। गरीब बहुत, वाइपर की अल्टी बहुत सही है पता है। उसने तो पूरा क्या बना दिया है, केक सही बना दिया। भाई लोग भाई मेरे दांतों पे वो दिख रहा है। हेलो Switching sides. लाइटिंग अजीब सी हो गई। नहीं पे ओ भाई इसके दांत में देखो यार। अरे वो पता है क्या है, वो ग्रीन स्क्रीन की वजह से होता है, दूर से नहीं, पास में लाइटिंग करता है ना। लाइट लेनी पड़ेगी। अब अल्फा विदाउट ग्रीन स्क्रीन यूज करेगा RTX का जो ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर। क्या सीन है, क्या सीन है वो बिना ग्रीन स्क्रीन के? क्या हाँ वो AI डेवलप किया इन्होंने। अच्छा कि मतलब सही नहीं होता। अब बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल नहीं आएगी 1%। कोई मिक्सर भी चला रहा है बगल में बैठ के, वो भी नहीं आएगी। अच्छा जी। हाँ कौन से कैसे? RTX फोर्स एक्सपीरियंस आ रहा है ना, पर वो RTX के वालों के लिए ही है। हाँ इनके लिए नहीं है। अरे जो प्रेजेंट में है इनका RTX वॉइस, वो भी तो RTX वालों के लिए है। हाँ दीदी को फायदा। बैकस्टैप चेक करना, बैकस्टैप मार रहा है वो। शोश प्लांट दो, शोश प्लांट दो। वो क्या ही हेड मारा है रे। वो हेड मार देगा सुयश मजे। सही हेड मार रहा है, देख क्या ही चल रहा भाई। Last player standing. वो हेड मार रही है वाइपर। मारेगी नहीं, ऐसा कैसे मार रही है? अरे अपना सुयश भी हेड मारेगा रे।
नाइस नाइस। अरे नाइस था ब्रो, नाइस हो गया था ऑलमोस्ट। नाइस। हाँ इस पे अब तुझे तेजाब डालना चाहिए था, पता है? मम्मी तो बाद में फेनलेस भाई बढ़ गया। चिचिक 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 चिचिक। तेजाब तेजाब अल्फा तेजाब तेजाब। हाँ तेजाब। अभी डालता है तेजाब। वाइपर तेजाब लाओ। तेजाब की तो शीशे लाना जरा। हार्पिक लाइए। अबे कोई तो दिला दो बे शहरी। अबे दूसरा हद राउंड हो गई बे। है। हाँ अभी तो खरीद सकते हो, अब तो जेडी भी नहीं है जिसके लिए तुम सेव कर रहे हो। उस दिन तो जेडी का नाम ले लिया था तुमने कि मैं तुम्हारे लिए सेव कर रहा हूँ। आज तो जेडी भी नहीं है। गेमर, अरे भाई बिल्कुल आराम ही हो रहा हूँ। अरे सॉरी गाइस, अरे मेरे पास गन भी नहीं है। मेरे पास भी। अरे मैं थोड़ा सामान लेने गया था। खेल कौन रहा था? तुमने वो खरीद लिया तेजाब? स्पाइक उठा लेना। अबे स्पेक्टर है तुम पे, श्योर स्पेक्टर है तुम पे। उठा लो बे। स्पेक्टर है। स्पाइक उठा लो बे। उठा लिया बे उसने, अब कितना उठाएगा? सी आ जाओ, सी आ जाओ, सी। ए चलो ए चलो ए चलो ए चलो ए चलो मत चलो चलो मत चलो। अरे पीछे है गेमर, मारो। मेरे पीछे आ मैंने गया। तो हेड लगाया हेड। राइट में बंदा। राइट हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हिल कर। रिलोड। आगे 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 क्या? मारो मार 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 भाई फट। कोई नहीं ब्रो, नाइस नाइस। तुम इस टाइम क्या कर सकते थे? वॉल बना सकते थे। हाँ वो भी कर सकता था। नहीं चलता दिमाग लेकिन यार इतना। अरे मेरे पे गन नहीं थी ना यार, हम पे यार। गन ही नहीं थी। मेरे पे कौन सी गन थी बे? अबे अल्फा ज्यादा नजदीक मत आओ। कौन मैं? हाँ कसम से ऐसा मन कर रहा है उल्टी कर देंगे अभी। ओ भाई मुंह पे भेज दी। अब हो रहा? नहीं अब नहीं हो रहा भाई, अब तो ठीक है। जेडी मेरी स्ट्रीम पे सब गोल कैसा लग रहा है? बढ़िया। हाँ दोनों के सब गोल्स मैंने भी देखे, अच्छा लग रहा है। सोच रहा हूँ ओवरले काटना है बे, नीचे से आधा काटना है मुझे। ओवरले का तो तुम बात ही मत करो। हाँ ओवरले यार, मैं तो बोल रहा हूँ हटा दो यार। नहीं बहुत जरूरत नहीं है यार। हम इतने भी बड़े स्ट्रीमर्स नहीं हुए अभी तक की ओवरले की जरूरत होगी। ये बड़े स्ट्रीमर्स को कहाँ जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग भाई? वगैरह का ठीक है। हाँ स्टार्टिंग वगैरह तो मैं अभी रखता हूँ ना। फ्लैश मैं करो, ये फ्लैश करो। गेम में पूरी स्क्रीन फुल स्क्रीन ही रखना चाहता हूँ। बंदा है। प्लांट बहुत बढ़िया। प्लांट। प्लान दो। हाथ दिया उसने। बॉल तोड़ रहा है। जेट आई। जेट आ गई। भाई हेड दिया। मारो। बहुत ही अप्रतिम। बहुत डैमेज। रेज़र पीछे। अबे क्या? भाई ओपी यार। अंदर ही वो अंदर राइट प्लांट करेगा वो। डिफ्यूज कर रहा है वो वाले। नहीं अभी नहीं करा। नहीं हो गया भाई। ओए बहुत अच्छी। भाई क्या ही है वेदांत लिखा है। और ग्रैंड मैं अंकल किस एंगल से अंकल लग रहा हूँ तुम्हें? हेलो अंकल। चाय पी लो, खाना खा के मत जाना, बहुत भुक्कड़ है यार। मेरा नेट में हग दिया। नेट में हग दिया मेरे। ये भी सही है भाई।
है।